Hi guys, welcome all of you who are watching this video. My name is Nikhil from Pratham Test Prep. I hope all of you are doing good and working hard for your pre-boards and boards examinations. आई एम अवेयर गाइज आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है. द एग्जामिनेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अप्रैल 2022. वी हैव गॉट द फाइनल डेट शीट. ऑफ कोर्स वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, बट वी विल आल्सो हैव टू कंसिडर कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं, एंड few of the university will be conducting their entrance test before the आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपके कुछ एंट्रेंस टेस्ट हो जाएंगे. लाइकवाइज इफ आई लिस्ट डाउन, एक यूनिवर्सिटी है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर एंड अदर प्लेसेस. उनके एंट्रेंस टेस्ट जो है दैट इज द फर्स्ट स्लॉट ऑफ एग्जामिनेशन इज 13th March 2022 बिफोर द एंट्रेंस बिफोर द बोर्ड्स एग्जामिनेशंस. NMIMS ने भी अपना फर्स्ट स्लॉट दे दिया है. यू कैन चूज द डेट फ्रॉम 1st April टू 20th April. इसके बीच में से आप कोई डेट चूज कर सकते हैं फॉर giving the entrance test for NMIMS. Alright, so guys, I would recommend कि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए, बट ऑल्सो start working on the entrance test too. हमको boards में of course we have to do good and we have to get very good marks in the boards examination, but also हमको बोर्ड एग्जाम के अलावा भी हमको वर्क करना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी, बिकॉज दोनों पे ही हम लोगों को वर्कआउट करना है. ऑलराइट, नाउ दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर शूटिंग टू हेल्प यू इन फिलिंग अप द फॉर्म फॉर ओबरॉय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म 2022. ओबरॉयज का स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉर दो स्टूडेंट हु वांट्स टू गेट इनटू द होटल इंडस्ट्रीज. ओके, जो स्टूडेंट्स होटल इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज फॉर यू. इफ आई लिस्ट डाउन, इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि HM के लिए आपको एप्लीकेशंस रिलीज़ कर चुकी हैं. लाइकवाइज इफ़ यू सी मणिपाल यूनिवर्सिटी हैज़ दैट HM प्रोग्राम, दे हैव ऑलरेडी रिलीज्ड देयर एप्लीकेशन फॉर्म. अलोंग विद दैट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है. दे हैव NCHMCT दैट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड already before the OBEROIs. So almost these 4-5 forms are already there which you can fill before the entrance test. अभी क्योंकि रिलीज हो चुके हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डिले द फॉर्म्स. जैसे ही फॉर्म रिलीज होते हैं आप फॉर्म फिलिंग वीडियोस को देखिए एंड उसको फिल कर लीजिए टाइम पर. ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में भी विल टॉक अबाउट ओबरॉयज कैसे वर्कआउट करता है, किस तरीके से उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं. विल शो यू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म एंड उस चीज़ में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे. Alright, so let me take you through the process of filling up the form. Let's talk about the Oberoi University first. The application, the course offered in Oberoi are, if you guys can see, hotel operations program होते हैं. इसके अंदर 3 options है आपके पास: front office and food beverages services, housekeeping and kitchen operations. Depending upon your choice, you can actually choose which option you want to go for later on when you actually crack the interview, the process of Oberoi's. All right, so eligibility criteria is 10+2 आपकी complete होनी चाहिए, which is recognized by Indira Gandhi National Open University, commonly known as IGNOU Universities, which is common CBSE, SCSE, जितने भी बोर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट सबको कवर करता ही है मेजॉरिटी. एंड इसमें एक क्राइटेरिया है दैट यू शुड गेट 70% in English when you are in 10th standard. So that is the criteria which they have made for Oberoi's. Age limit should be above 18 to 20 years old. This is the age limit as on 1st July 2022. So on that particular day is एज के ड्यूरेशन में, एज गैप में ही आपका होना चाहिए आपकी एज. ऑलराइट, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दे विल बी कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फॉर यू गाइस. आपका इंटरव्यू बेस्ड ही आपका सिलेक्शन होगा. देयर इज नो एंट्रेंस टेस्ट. यहाँ पर आपका कुछ एंट्रेंस टेस्ट होता ही नहीं है. आपको जस्ट इंटरव्यूज देने हैं 1 2 3 राउंड एंड यू विल बी सिलेक्टेड इन दी ओबरॉयज. एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 20th February 2022 को, एंड द लास्ट डे टू फिल अप द फॉर्म इज 20th April 2022. एग्जाम डेट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट. वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे एंड लेटर ऑन दे विल टेल यू व्हेन दे आर कंडक्टिंग द इंटरव्यू फॉर यू गाइस. ओके, वी हैव गॉट द डायरेक्ट लिंक टू फिल अप दैट फॉर्म. एप्लीकेशन फीस इज नॉट रिक्वायर्ड. Guys, one thing I would like to highlight before I take you through the process of Oberoi's. Oberoi's का जो एप्लीकेशन फीस है that is free of cost. You don't have to pay anything for the application. Even when you get into the program, you don't have to pay anything to Oberoi's. Even उसके अलावा Oberoi's में जब आप एक्चुअली जाते हैं, you will get the stipend from Oberoi's. Okay, आपको stipend मिलता है when you actually work for Oberoi's. So
there's no fee structure for OBEROI. There's no application fees. So there are a lot of people in India जो कि होटल इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं. Their first priority is OBEROI because कुछ you don't have to pay anything to the university to OBEROI to actually prepare you for hotel management. So can be considered a very good option to apply for. All right. So next I'll talk about the program. As I've already informed, these are the specialization you can do in STEP program. STEP is systematic training and education program. Okay. Now कुछ benefits मैं आपको बता देता हूँ इस particular चीज़ के बारे में. ओबरॉयज का जो STP प्रोग्राम है इसमें आपका इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ही आपको एक बैचलर डिग्री मिलेगी विच इज़ बैचलर इन टूरिज्म एंड टूरिज्म स्टडीज़. बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़ का आपको एक अलग से सर्टिफिकेट भी मिलेगा. योर ड्यूटी मील्स, योर बुक्स एंड एवरीथिंग, दो यूनिफॉर्म मेडिकल अलाउंस, वो सब चीज़ आपको ओबरॉय ही प्रोवाइड करेगा. यू डोंट हैव टू go for anything else. You don't have to pay for it. So all these things are a part of this particular program. Now the program also include a study day once a week. So आपके majority of the time you will be working for OBEROI and उसमें एक या दो दिन वो लोग consider करेंगे for their actually academic part. Otherwise वो majority आपको वो practical exposure देते हैं OBEROI में. Okay, so प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा है तो आई थिंक चांसेस ज़्यादा ही हो जाते हैं. एंड फाइनली व्हेन यू एक्चुअली गो फॉर दी स्टेप प्रोग्राम, वंस यू क्रैक द एंट्रेंस टेस्ट, व्हेन यू गेट इनटू द प्रोग्राम एंड यू कंप्लीट दैट, उसके बाद ओबरॉय आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू वर्क देयर एज ऑपरेशन असिस्टेंट फॉर देयर होटल्स. सो अगेन once you actually complete that, the OBEROI आपको खुद ही हायर कर लेता है फॉर देयर ऑपरेशन पर्पसेस. सो good deal, I think overall a good deal. Without investing I am actually getting the job, I am able to work for a good brand. So it can be a very good deal. Okay, now going ahead I'll be talking about the registration. February से लेकर अप्रैल तक का registration होगा. इसका assessment and interviews होंगे April and May month में. As of now what is mentioned in the website, a result they will declare in the month of June or July. All right, one thing is very important guys, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, when you get the selection letter from OBEROI, आपको वहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट का जो आपने फॉर्म फिल करेंगे उसका एक प्रिंट आउट लेके जाना होगा आपको along with your passport size photograph to the address given by OBEROI people. I will be sharing the address also OBEROI का जहाँ पर आपको normally जाना होता है. Alright, in the next video I'll be in the next stages I'll show you कि कहाँ पर आपको normally जाना होता है. All right, let's move ahead and fill up that form. Okay, this is the basic form we have. I will have to punch in the date of birth here on the top option. I will have to choose the gender, my first name and the last name. The middle name is not star mark. That means if you have the middle name you can punch in that. If you don't have the middle name you can skip that particular part. Okay, you'll have to punch in the mobile number, alternate mobile number, email ID and then city of residence. कि आप कहाँ से belong करते हैं, आपको city of residence आपको mention करना है. Below that you'll have to punch in the information for your parents, your father name, your father guardian name, their occupation, same with your mother name and occupation, and father or mother email ID. So any email ID, alternate email ID you can punch in there. Okay, they need the alternate email ID. Once you do that it will take you to this particular thing. You have the programs, hotel operations and kitchen operations, ये options हैं. So supposingly for a dummy I click on hotel operations. So hotel operations के अंदर I have front office and food and beverages services and housekeeping. Depending upon my choice कि मेरी choice क्या है, मैं उसके अंदर मैं choose कर सकता हूँ कि मैं इनमें से कौन से वाली एरिया में जाना चाहता हूँ. If I want to do something in cooking I can choose the kitchen operations. Depending upon my choice I can choose my desired course for myself out of these options. Okay, so once I do that it will give me the preferences of interview date कि मुझे कहाँ पर interview देना चाहता हूँ. So these are the locations given here कि कहाँ पर आप अपने interviews को conduct करवा सकते हैं. So I would recommend you जहाँ पर भी आप जिस भी city में हैं, अगर वो city यहाँ पर stated नहीं है so please choose the city which is nearby to your place so that आपको computing के time पर problem ना हो, because ऐसा ना हो कि आप उस particular interview को आप skip कर दें. Okay, so I always recommend my students कि आप जब भी अपना इंटरव्यू डेट और लोकेशन चूज करते हैं उसको अपने नियर बाय लोकेशन में ही चूज कीजिए. Alright, so now on the below section I will have to choose 12th
ईयर 12th का इन्फॉर्मेशन मुझे डालना है. ईयर ऑफ कंप्लीशन 2022 आई मेंशन बिकॉज इफ अ स्टूडेंट हु इज इन 12th स्टैंडर्ड एंड विल बी गिविंग द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022, सो आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन 2022 ही होगा. मे बी यू गेट द रिजल्ट इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. आई हैव टू मेंशन माय नेम ऑफ द बोर्ड, नेम ऑफ द स्कूल, subject studied in the class. So I have to, English के marks आपको लिखने हैं and overall percentage for 12th. Okay, now फॉर ट्वेल्थ आपको ट्वेल्थ में आपको ये आप इन्फॉर्मेशन फिल इन करने के बाद आप स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, एंड यू कैन स्किप द इंग्लिश मार्क्स एंड द ओवरऑल मार्क्स बिकॉज दैट इज नॉट मैंडेटरी, यू वुड नॉट हैव गॉट द फाइनल रिजल्ट, सो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं. Okay, same way that the 12th information which I have mentioned, I will have to also mention the 10th information. So 10th के लिए भी I will have to choose the year of passing, the name of the board, school, subject studies, English marks and the overall percentage. ये मुझे पूरा का पूरा part fill करना होगा because I would have completed 10th if I'm applying for this particular part. Okay, below that, once I do that, it will give me this particular option where I will have to choose the height, my height, my weight, eyesight normal है या with glasses है, and the blood group. These are the basic information which I will have to punch in. उसके नीचे दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको ये पर्टिकुलर पार्ट को बहुत ध्यान से फिल करना होगा. सो इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए. देर आर 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू मेंशन इट. ओके, सो योर अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 500 कैरेक्टर्स. सो आप अपने अचीवमेंट्स, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, आई वुड से जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं फ्रॉम 9 टू 12th, आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिले हैं, एमयूएस पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशंस, आपके डिबेट कॉम्पिटिशंस, वॉट एवर यू हैव डन इन योर एकेडमिक, नॉन एकेडमिक एंड एकेडमिक थिंग्स, यू कैन मेंशन ऑल दैट इन्फॉर्मेशन हेयर. अच्छा, यहाँ पर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेज कि मेरे पास तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, विच सर्टिफिकेट आई शुड यूज़ एंड किसको मुझे जस्टिफाई करना है. We have 500 characters, so I think in 500 character we'll be able to tell all the things whatever we have done. But मैं recommend करता हूँ कि आप उस चीज़ को prioritize कीजिए जिसका value ज़्यादा होता है. When you get the certificates along with you, you get to know कि अच्छा ये मेरे पास certificate है जिसकी priority, जिसकी credibility ज़्यादा है, आप उसको पहले लिखिए and उसके side by side आप उसको बाकी चीज़ों का mention कर सकते हैं. Alright, so this is something which you will have to mention. Below that you have an option that why do you want to go for hospitality industry. This is very important guys. आपका एक लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स द आंसर दैट व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. जब भी हम लोग कोई कोर्स चूज करते हैं, कुछ भी हम अप्लाई करते हैं, सो वी हैव समथिंग इन आवर माइंड कि हम वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्यों एंटर करना चाहते हैं. ओके, देयर शुड बी अ लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स दैट द आंसर. ठीक है, सो आपको वो भी 500 वर्ड्स में लिखना होगा दैट दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो, द रीजन व्हाई आई वांट टू गो फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सो आंसर ऑफ कोर्स दैट बी योर ओन, it cannot be a common answer, you know. आपका अपना एक आंसर फ्रेमिंग होना चाहिए because if you google it out you will find few answers there. So but I would recommend कि आप उसको अपने words में लिखिए. At least you can refer to something, but at least उसका जो framing है that you do by your own. ठीक है, because common होगा तो doesn't work out. I think आपको उसको ठीक से frame करके लिखना चाहिए. Alright. Now, what does excellent guest service mean to you? So again, since you are getting into a hospitality industry, people call it hotel management. So when you get into hospitality industry, वो आपसे जानना चाहते हैं कि when your guest comes to you, so वो आपके लिए क्या value करते हैं, किस तरीके से करते हैं. So you will have to justify the answer कि उसमें आपको mention करना होगा कि how good you are in actually pleasing people, pleasing your guests. So that is a part which you will have to mention separately here on this particular part. Again, 500 characters for each of the questions. So each of the questions are very very important. Why? Because क्या होता है कि जब अभी आप interviews के लिए जाते हैं ना, so majority of the time faculties or people who are taking your interviews will be asking you questions related to these things only which you have filled. Okay, so they'll go through your form, they will check that information, and then they might ask you question related to these particular things which you have filled. There are more chances that you get the questions from out of the things you have written here. So बहुत cautiously आप इस particular part को
फिल कीजिए। ओके, नाउ वी हैव द चेक बॉक्स हियर। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, ये इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव ऑलरेडी है ओबरॉयज के अंदर तो आप उस पर चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसका एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दीजिए, डोंट हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप किसी को जानते हैं रेफरेंस में है, वंस यू क्लिक ऑन येस ऑन दैट, अगर आप कोई रेफरेंस है तो आपको उनका डिपार्टमेंट नेम एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी फिल इन करना होगा। सो इफ़ यू हैव द एक्चुअल you know someone in Oberoi, then you mention it. अगर आप नहीं जानते हैं तो you can keep that blank. All right, I hope this particular part is clear. Let's move forward, and I will have to attach the passport size photograph. I have already attached a passport size photograph. The size has to be maximum of 100 KB and should be JPG format. Okay, आपको वो particular photograph को attach करना होगा. We have uploaded a dummy photograph. If in case you face problem in attaching the photograph, it is easy because normally जब हम photograph click करते हैं अपने किसी भी कैमरा से फ़ोन से, so the size is normally 5 MB, 10 MB depending upon the resolution which we have chosen. Now the thing is, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए compress image, you'll get a number of softwares in Google through which you can actually compress the size of the photograph. So supposingly मेरा 4 MB का photograph था, I've compressed it और 2 MB हो गया, अब मुझे 100 KB के अंदर आना है तो I can further shrink that photograph also. So it is not difficult to shrink the photograph even using the paint section also. जो अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें भी पेंट ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप इजीली एक फोटोग्राफ को कंप्रेस कर सकते हैं। वहाँ पर पिक्सल साइज को अगर आप डिक्रीज कर देंगे पेंट के अंदर, इट विल डिक्रीज द साइज ऑफ द फोटोग्राफ ऑल्सो। ओके, सो नॉट डिफिकल्ट टास्क टू डू इट। तो ये करने के बाद यू विल क्लिक ऑन सबमिट ऑप्शन। So once you submit option, you click on submit option, this will be the application number you'll be getting on this particular thing. Please save it somewhere, if you screenshot भी ले लीजिए। Although the Oberoi will be sending you that mail related to this particular thing, जो आपने फॉर्म फिल किया आपके पास पूरा मेल आ जाएगा and they will notify you whenever they'll be conducting the interview. So click here to take the print out. As I've already stated कि आपको जो प्रिंट आउट लेके जाना है विद योर फोटोग्राफ, द फोटोग्राफ विच यू हैव अटैच्ड देयर, वो आपको फोटोग्राफ लेकर जानी है, तो प्रिंट आउट लेके आप रखिए। एंड देन जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आप वो ओबरॉयस यूनिवर्सिटी ओबरॉयस, आपको उस टाइम पर फोटोग्राफ के साथ ये पर्टिकुलर फॉर्म को ले जाना होगा। दैट्स इट। एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि यहाँ पर कोई पेमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ एप्लीकेशन फीस नहीं है, डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जस्ट हैव टू टेक द प्रिंट आउट एंड योर फॉर्म इज डन। सो ये पर्टिकुलर पार्ट है जो आपके मेल आपकी ईमेल आईडी पर रिसीव होगा एंड इस यहाँ पर से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। आइदर यू कैन टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम हेयर और यू कैन टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर place also. So if you wish to make any changes, वहाँ पर एक ऑप्शन है click on yes, अगर आप changes करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, otherwise that is done. Before I close this particular video, I would like to tell you कि मैं as I've told you कि आपको दिल्ली में कहाँ पर एड्रेस होता है। So दिल्ली का एड्रेस जो है we have already mentioned on this particular part. This is the address which they have in Delhi region. For any queries if you have, although you can contact us for any kind of query, अगर आप कहीं पर प्रॉब्लम फेस करते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, you can contact us. Also we have got that email ID of Oberoi. You can directly mark a mail to step@oberoigroup.com and ocld@oberoigroup.com. So these are the two email IDs which is given by Oberoi. अगर आपके पास कुछ queries ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं and आप उसको चाहते हैं उसको रिजॉल्व करवाना, you can directly mark a mail to Oberoi as well. All right, so that's it. This is how we fill up that form for Oberoi. That was not a difficult task, but somewhere we'll have to there are minute points जहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, सो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम हाईलाइट कर देते हैं प्रोएक्टिवली इस पर्टिकुलर वीडियोस में। स्टिल इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द फॉर्म, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दी फोन नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल हेल्प यू इन फिलिंग अप द फॉर्म और एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट जॉइंड एनीवेयर, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, वी वुड रिकमेंड यू कि आप अपनी प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी शुरू कीजिए, बिकॉज हमको बोर्ड्स में तो अच्छा करना ही है बट वी ऑल्सो हैव टू परफॉर्म इन दी एंट्रेंस टेस्ट टू। ठीक है, सो वी हैव आवर फोन नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस इफ यू वांट टू जॉइन प्रथम
or if you have joined somewhere else also, still we can help you in somewhere. हमारा जो यूट्यूब चैनल है विच इज़ प्रथम टेस्ट प्रेप, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। उस पर जो भी फॉर्म फिलिंग वीडियोस हम लोग फर्दर क्रिएट करेंगे, यू विल बी एबल टू सी द फॉर्म फिलिंग वीडियोस ऑल्सो, यू विल बी गेट अ नोटिफिकेशन देयर। इसके अलावा भी कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं रेगुलरली, जो हम रन करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉ के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस हम लोग रन करते हैं, कुछ वोकैबुलरी क्लासेस रन करते हैं, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एक्चुअली क्रैकिंग द एंट्रेंस टेस्ट। आपने अगर कहीं ऑलरेडी ज्वाइन भी किया हुआ है, नो प्रॉब्लम, सब जस्ट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एटलीस्ट, उससे भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा टू डू गुड इन द एंट्रेंस टेस्ट। इवन इफ यू नॉट ज्वाइन एनीवेयर, सो आप उस यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लीजिए, एंड आई वुड विश यू ऑल ऑफ यू do good in the entrance test and the board examination also. All right, so closing the video right now, and we'll be catching on the next videos we'll be creating for you guys. Till that time, take care of your families, and stay safe. Have a nice